Today we are going to discuss the detail of the components of cytoskeleton. In this lecture we will discuss the microtubule, that is the thickest of all the components of the cytoskeleton. In previous lecture we have discussed about the overview of cytoskeleton, we have discussed the functions and the components of cytoskeleton in general. In the previous lecture, we have classified the cytoskeleton into three components: microtubule, actin filaments, and intermediate filaments. Microtubules are the thickest of the three type of the filaments, made up of globular tubulin subunits. In this lecture, we will discuss the detail of the microtubule. In the next lecture, we will discuss the detail of actin filaments and intermediate filament. Microtubules. All eukaryotic cells have microtubules. Microtubules are stiff, hollow rods constructed from globular proteins called tubulin. The composition of the microtubule is from tubulin. Size of microtubule is 25 nanometer in diameter and the size of lumen is 15 nanometer. जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर है और जो इंटरनल ल्यूमन कैविटी का डायमीटर है वो 15 नैनोमीटर है. Microtubule disassemble in one location and reassemble in the another location. Microtubules mainly assemble and deassemble in different locations. Microtubules normally found in cilia, flagella, centriole, and basal granules. Structure of microtubules. Microtubules are hollow tubes with structurally distinct ends. Internally, these are the hollow. Microtubules are built from subunits molecule of the tubulin, each of which it itself a dimer composed of two very similar globular proteins called alpha-tubulin and beta-tubulin. They are bound tightly together by non-covalent interactions. जो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन है non-covalent आपस में इंटरेक्ट होती हैं, बांड होती हैं, दे फॉर्म द ट्यूबुलिन, और वो अल्फा और बीटा जो डाइमर हैं वो फिर आपस में कंबाइन होने के बाद पूरा माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर बनाती हैं. सो बेसिक जो कंपोजिशन है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल्स की वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है. अब ट्यूबुलिन प्रोटीन किस फॉर्म में होती हैं? वो डाइमर की फॉर्म में होती है. डाइमर में क्या होता है? डाइमर में अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन होती है, ये आपस में non-covalent इंटरेक्शन से बाउंड होती हैं. द ट्यूबुलिन डाइमर्स स्टैक टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, अगेन बाय non-covalent बॉन्डिंग टू फॉर्म द वॉल ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स. इससे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो हॉलो वॉल्स हैं वो जो अल्फा और बीटा डाइमर से मिलकर बनती है. This tube-like structure is made of 13 parallel protofilaments, each a linear chain of tubulin dimers with alpha and beta tubulin alternating along its length. हर जो चेन है वो alternatively alpha beta से composed होती है. Each protofilament has a structural polarity with the alpha tubulin exposed at one end and the beta tubulin at the other end. जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं दे आर द पोलर बिकॉज एक एंड पे उसके अल्फा ट्यूबुलिन होती है, दूसरे एंड पे बीटा ट्यूबुलिन होती है. वन एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल थॉट टू बी द बीटा ट्यूबुलिन एंड इज कॉल्ड द प्लस एंड एंड द अदर द अल्फा ट्यूबुलिन एंड इज इन इट्स माइनस एंड. चूंकि माइक्रोट्यूब्यूल पोलर है, पोलर मीन टू एंड, प्लस एंड और माइनस एंड. एक एंड इसका पॉजिटिव, दूसरा एंड नेगेटिव. अब पॉजिटिव किस वजह से? पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द असेंबली एंड डिसअसेंबली. इसमें जो एलोंगेशन होती है पॉजिटिव एंड पे होती है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द प्लस एंड. नेगेटिव एंड पे बहुत कम एडिशन होती है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द माइनस एंड. One end can accumulate or release tubulin dimers at a much higher rate than the other. जो एक एंड होता है, जो पॉजिटिव एंड होता है, उसमें ट्यूबुलिन डाइमर्स की एडिशन और डिलीशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत उसका रेट ऑफ एडिशन एंड डिलीशन is high as compared to other end, thus growing and shrinkage significantly during cellular activities. इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल ग्रो भी होते हैं और श्रिंक होते हैं सेलुलर एक्टिविटीज के दौरान. हाउ दिस ग्रो एंड श्रिंक? दिस ग्रोइंग एंड श्रिंकेज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स डिपेंड ऑन द जीटीपी. अगर जीटीपी है और जीटीपी डायमर के साथ बाइंड है तो इसकी ग्रोइंग होगी. अगर जीटीपी बाइंड है डायमर के साथ देन इट विल श्रिंक. दिस इज कॉल्ड द प्लस एंड. This is called the plus end, not because it only can add tubulin proteins, but because it's the end where both on and off rates are much higher. इसमें deletion जो addition rate दोनों ज़्यादा होते हैं. If microtubule had no polarity, अगर इसमें polarity ना हो, plus और minus end ना हो, they could not guide intracellular transport. इसमें intracellular transport ना हो. That's why polarity is important for microtubule. Polarity mean plus n and minus n.
Structure of the microtubule. Microtubule mainly composed of the tubulin protein, and these tubulin protein found in the heterodimer alpha and beta protein that are the subunit of this microtubule. These alpha and beta proteins are arranged with each other alternatively. अल्फा और बीटा आपस में अरेंज होती हैं और उसके बाद वो एक दूसरे के साथ अरेंज नॉन कॉमनली अरेंज होकर पूरा एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। एक्चुअली ये प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं, बहुत से प्रोटोफिलामेंट मिलके माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। इसके दो एंड्स हैं, प्लस एंड और माइनस एंड। व्हेन दीज अल्फा बीटा एंड अल्फा चेन अल्टरनेटली अरेंज विद ईच अदर दे फॉर्म ए हालो स्ट्रक्चर। इससे हालो स्ट्रक्चर बनती है जो माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें जो ल्यूमन है, इस ल्यूमन का साइज 15 नैनोमीटर है, जो एक्सटर्नल डायमीटर है दैट इज 25 नैनोमीटर। तो अरेंजमेंट कैसी है? अरेंजमेंट इसकी है अल्टरनेटिवली अरेंजमेंट। ये बीटा सब यूनिट आ रहे हैं और ये अल्फा सब यूनिट आ रहे हैं, बीटा सब यूनिट अल्फा सब यूनिट, these are alternatively arranged and form the protofilaments, and then these protofilaments will form the microtubules. These are different। पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटोफिलामेंट का, दूसरा प्रोटोफिलामेंट, इस तरह पूरे 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे और 13 प्रोटोफिलामेंट्स कंबाइन होंगे, उसमें फर्दर बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट्स कंबाइन होंगे और वो माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा। दिस इज द प्रोटोफिलामेंट स्ट्रक्चर। ये प्रोटोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर है जो 13 डिफरेंट जो आपस में अरेंज हेटेरोडाइमर्स इसमें ऐसे elongated होते हैं, उससे फिर अरेंजमेंट होकर माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। The centrosome is the major microtubule organizing center in animal cell. जो सेंट्रोसोम है वो माइक्रोट्यूब्यूल को सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। Inside cells, microtubules grow from specialized organizing centers that control the location, number, and orientation of the microtubule. माइक्रोट्यूब्यूल की लोकेशन को, माइक्रोट्यूब्यूल के नंबर को, ओरिएंटेशन को कौन कंट्रोल करते हैं? सेंट्रोसोम। फॉर एग्जांपल इन एनिमल सेल द सेंट्रोसोम व्हिच इज टिपिकली क्लोज द सेल न्यूक्लियस व्हेन द सेल इज नॉट इन माइटोसिस ऑर्गेनाइजेज एन अरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट रेडिएट आउटवर्ड थ्रू द साइटोप्लाज्म। तो सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेट होते हैं। Now we look at what is centrosome. Centrosome consists of a pair of centrioles surrounded by a matrix protein. जब pair of centrioles जो एक दूसरे के साथ perpendicularly attach होते हैं, जब उसको matrix protein जब surround करती हैं, their structure is called centrosome. The centrosome matrix includes hundreds of ring-shaped structures formed from a special type of tubulin called the gamma-tubulin. सेंट्रोसोम में जो प्रोटीन होती है वो गैमा ट्यूबुलिन कहलाती है। ईच गैमा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट और न्यूक्लिएशन साइट फॉर द ग्रोथ ऑफ वन माइक्रोट्यूब्यूल। और हर जो गैमा ट्यूबुलिन रिंग है, ईच गैमा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। दिस इज द सेंट्रोसोम। पेयर ऑफ द सेंट्रियोल, वन सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ अटैच है। पेयर ऑफ सेंट्रियोल सराउंडेड बाय ए प्रोटीन, दीज आर कॉल्ड द मैट्रिक्स प्रोटीन। जब मैट्रिक्स प्रोटीन इनको इनक्लोज करेगी सेंट्रियोल को, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रोसोम, एंड दिस सेंट्रोसोम हैज अ न्यूक्लिएशन साइट दैट इज द गैमा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। इस जगह से हमारे माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेट होंगे। The alpha-beta tubulin dimers add to each gamma-tubulin ring complex in a specific orientation, with the result that the minus end of each microtubule is embedded in the centrosome, and the growth occurs only at the plus end that extends into cytoplasm. जो gamma ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां से हमारे अल्फा बीटा ट्यूबुलिन आपस में अरेंज होना शुरू होंगे और देयर एक्सटेंड देयर फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल। जो माइनस एंड है वो रिमेन होगा, एम्बेडेड होगा सेंट्रोसोम में, और जो प्लस एंड होगा वो एक्सटेंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्लस एंड, के यहाँ से एलोंगेशन होती है। यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रोसोम। उसके ओरिजिन क्या है, न्यूक्लिएशन साइट क्या है, दैट इज द गैमा ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्स इज द ओरिजिन साइट आर द start point of the gamma of the microtubules. Microtubules grow at their plus end from the gamma tubulin ring complex of the centrosome. Centrosome के gamma tubulin ring से microtubules grow कर रहे हैं, उसमें अल्फा बीटा एडिशन कहाँ पे हो रही है? प्लस एंड पे हो रही है। सो हम कह सकते हैं कि microtubules are originated from the gamma tubulin ring of the centrosome. ग्रोइंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हमने डिस्कस किया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो भी होते हैं और श्रिंक भी होते हैं। ग्रोइंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द ट्यूबुलिन डाइमर विद बाउंड जीटीपी।
जब GTP tubulin dimer होगा, then GTP tubulin dimers aid to growing end of the microtubules. तो GTP tubulin dimers growing end पे क्या होंगे? ऐड होंगे. जो ऐड होंगे उसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा. Addition proceeds faster than GTP hydrolysis by the dimers. अब addition GTP hydrolysis से ज्यादा है, तो GTP क्या बन जाएगी? इट मीन इसका जो ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर क्या होगी? ग्रो होगी. तो जब GTP बाउंड होगा इट मीन ग्रोइंग है, जब GTP बाउंड होगा इट मीन श्रिंकेज है. This is a shrinkage of microtubule. Shrinkage of microtubules mean protofilaments containing GDP tubulin peel away from the microtubule wall. जब GDP tubulin is released to the cytosol, तो GDP tubulin जो वो रिलीज आउट होंगे. जब GDP tubulin रिलीज आउट होंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या होगा? श्रिंक, उसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. Functions of microtubules. Microtubules provide shape and mechanical support to the cell. Basic function cytoskeleton का कि microtubule provide shape and mechanical support to the cell. Extending out toward the cell periphery, they create a system of tracts within the cell along which vesicles, organelles, and other cell components can be transported. So microtubule help in the transportation of different types of components within the cell. Microtubule responsible for transporting and positioning membrane enclosed organelles within the cell and for guiding the intracellular transport of various cytosolic macromolecules. Organelles को अपनी करेक्ट पोजीशन में रखता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में मतलब साइटोसोलिक जो मैक्रोमोलेक्यूल्स है उनकी ट्रांसपोर्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स. Microtubules guide vesicles from endoplasmatic fluid to Golgi apparatus and from the Golgi apparatus to the plasma membrane. When cell enters mitosis, the cytoplasmic microtubule disassemble and then reassemble into an intricate structure called the mitotic spindle. Cell division के दौरान mitotic spindle बनते हैं, which involves in the separation of chromosome during cell division. Microtubules can also form stable structures such as the rhythmically beating cilia and flagella. Cilia और flagella में microtubule का बहुत important role है. Microtubules involved in the synthesis of cell wall in plants. These are different functions of specifically with the microtubules, और यही function फिर बन जाएंगे function of the cytoskeleton. मोटर प्रोटीन्स ड्राइव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट. हमने डिस्कस किया कि मेनली microtubules involved in the transport of different type components. अब what components mainly involved in the transport? तो उसमें जो major role है वो motor proteins का है. Motor proteins drive intracellular transport. If a living cell is observed in a light microscope, its cytoplasm is seen to be in continual motion. तो माइक्रोस्कोप में अगर हम सेल को देखें तो साइटोप्लाज्म कंटिन्यू मोशन में रहता है. दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग. माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्मॉलर मेम्ब्रेन enclose organelles and vesicles travel in small jerky steps, moving for a short period, stopping and then moving again. तो माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ स्मॉल मेम्ब्रेन enclosed organelles हैं और vesicles हैं, they are travel in small jerky steps. They are moving, stop and then start again moving. This saltatory movement is much more sustained and directional. Saltatory movement mean कि movement होनी और उसमें फिर stop होना. This is called the saltatory movement. It is sustained and directional. Saltatory movements can occur along either microtubules or actin filaments. तो इसमें दोनों का रोल है, microtubules का रोल भी और actin filaments का रोल भी है. The movements are driven by motor proteins. What are the source of this protein movement inside the cell? तो उसमें जो responsibility है वो motor proteins की है, which use the energy derived from the repeated cycles of ATP hydrolysis to travel steadily along the microtubule or actin filaments in a single direction. Because the motor proteins also attach to the to other cell components, they can transport this cargo along the filaments. There are dozens of different motor proteins. They differ in the type of filament they bind to, the direction in which they move along the filament, and the cargo they carry. डिफरेंट मोटर प्रोटीन्स हैं, उसकी अब डिपेंड टाइप्स किस पे डिपेंड करती हैं, उसकी टाइप ऑफ फिलामेंट भी डिपेंड करती हैं, उसकी डायरेक्शन भी डिपेंड करती हैं और उसके कार्गो पे डिपेंड करती हैं वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रही हैं. तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ओवरव्यू में कि मोटर प्रोटीन में जो मोटर प्रोटीन एक्ट एज ए व्हील के तौर पर एक्ट करती हैं, उसके ऊपर रिसेप्टर का बाइंड करते हैं वेसिकल के, और जो साइटोस्केलेटन जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल है, एक्टिन फिलामेंट है, एक्ट एज ए ट्रेन ट्रैक.
The motor proteins that move along cytoplasmic microtubules, such as those in the axons of a nerve cell, belong to two families. वो माइक्रोट्यूब्यूल जो एक्सॉन नर्व सेल में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, that belongs to two families. Number one, the kinesins generally move toward the plus end of a microtubule, that is outward from the cell body. The dyneins move toward the minus end toward the cell body. जो प्लस एंड की तरफ जाएंगी वो काइनेसिन होंगी, वो पेरिफेरी की तरफ मूव होंगी, और जो माइनस एंड की तरफ मूव होंगी सेल बॉडी की तरफ मूव, दैट आर द डाइनेन्स. बोथ काइनेसिन्स एंड डाइनेन्स आर जनरली डाइमर्स दैट हैव टू ग्लोबुलर एटीपी बाइंडिंग हेड्स एंड ए सिंगल टेल. The kinesins move towards the positive end, and this movement, these are the cytoskeleton mean microtubules. ये microtubules पटरी के तौर पर काम कर रहा है, ये उसके व्हील काइनेसिन जो मोटर प्रोटीन्स हैं ये व्हील की तरह काम कर रहे हैं, ये कार्गो कर रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं किसी वेसिकल्स को, एंड दिस काइनेसिन इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, towards the positive and periphery की तरफ लेके जाएंगी. तो this type of movement is called anterograde cargo. Anterograde cargo. ये स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल का, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन जो कंपोज कर रही हैं. डाइनेन्स responsible for the movement of the cargo towards the minus end, negative end की तरफ लेके जा रही हैं. This type of movement is called retrograde cargo or retrograde movement. Cilia and flagella contain stable microtubule moved by dyneins. Cilia and flagella also contain stable microtubules that are responsible for the movement of the cell, and different role है cilia और flagella का body में. In eukaryotes, a specialized arrangement of microtubule is responsible for beating of flagella and cilia. The size of cilia is 0.25 micrometer in diameter. Microtubule containing extensions that project from cells, some cells. The bacterial flagellum has a completely different structure. उसका structure इसके साथ match नहीं करता. Many unicellular eukaryotes are propelled through water by cilia or flagella that act as locomotor appendages, and the sperm of the animals, algae, and some plants also have the flagella. When cilia or flagella extends from cells that are held in place as part of a tissue layer, they can move fluid over the surface of the tissue. For example, the ciliated lining of the trachea windpipe sweeps mucus containing trapped debris out of the lungs. उसमें जो debris हैं उसको lungs से बाहर exchange करते हैं, बाहर निकालते हैं. In a woman reproductive tract, the cilia lining the oviduct help move and act towards the uterus. Cilia help in the movement of the egg towards the uterus, that is provide a favorable condition for the fertilization. Motile cilia usually occurs in large numbers on cell surface. A cilium may also act as a signaling receiving antenna. Cilia signaling में बहुत important role अदा करता है for the cell. Cilia that have these functions are generally non-motile, and there is only one per cells. जो सिलिया सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मेनली उनकी जो नंबर होता है एक सेल में एक ही होता है. इनफैक्ट इन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स इट अपीयर्स दैट ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ माइसीलियम such cilium that is called the primary cilium. Primary cilium that are the non-motile cilium and responsible for signaling, receive signaling, and act as an antenna. Cilium-based signaling appears to be crucial to brain function and embryonic development. Brain function और embryonic development में cilium-based signaling is very important. Flagella are usually limited to just one or few per cells. Flagella एक भी हो सकते हैं, उसकी अमाउंट एक से ज़्यादा भी हो सकती है, and they are longer than the cilia. Flagella and cilia differ in their beating patterns. दोनों का beating patterns different है. A flagellum has an undulating motion like a tail of the fish, and in contrast, cilia work more like oars with alternating power and recovery stroke, much like the oars of a racing crew boat. ये power stroke of the oars की तरह है, इसमें alternating power and recovery stroke है, जबकि flagellum में undulating motion है like the tail of the fish. This is the movement of the flagella and the cilia. Flagella is moved like the undulating movement and motion driven in the same direction. That is the axis of the flagella. Flagella. This is the flagella movement of the sperm, and
the cilia mainly move undulating back and stroke movement, back and forth motion that is the rapid power stroke moves the cells in direction that is perpendicular to the axis of the cilia. Undulating movement and back and forth movement. Structure of cilia and flagella. Though different in length, flagella and cilia both are different in length, different in number per cells, and beating patterns are different. Motile cilia and flagella share the common structure. Each motile cilium and flagellum has a group of microtubules sheathed in an extension of the plasma membrane. Flagella और cilia दोनों में microtubules मौजूद होते हैं that are sheathed with the plasma membrane. 9 doublets of microtubules are arranged in a ring with 2 single microtubules in the center. 9 plus 2 composition है flagella और cilium में. This arrangement is referred to as 9 plus 2 pattern is found in nearly all eukaryotic flagella and motile cilia. Motile cilia में जो arrangement है 9 plus 2 है. Non-motile primary cilia have 9 plus 0 patterns, lacking the central pair of microtubules. Non-motile जो primary cilia है उसमें जो central microtubules है वो absent होते हैं. The microtubule assembly of a cilium or flagellum is anchored in the cell by basal body, which is surrounded very similar to the centriole with microtubule triplet in a 9 plus 0 pattern. In fact, in many animals, including humans, the basal body of the fertilizing sperm's flagellum enters the egg and becomes a centriole. उसकी जो basal body है वो fertilizing sperms की वो enter होती है egg में and that will become the centriole. Structure of the flagella and the cilium 9 plus 2 arrangement. These are 9 triplet and with the internal central microtubule. Enclosed with the plasma membrane. Plasma membrane enclosed the 9 plus 2 microtubules that form the structure of the cilia and the flagella. Outer microtubules doublet, and these are the motor proteins act as these are the dyneins, and the central microtubule and radial spoke that connect the central with the peripheral microtubules or outer microtubules, and these are the cross linking proteins between the outer doublets. So this is 9 plus 2 arrangement in the motile cilium and the flagella. How does the microtubule assembly produce the bending movements of the flagella and motile cilia? Bending involves large motor proteins called dyneins. जो bending है cilia में या flagella में, that is due to the protein called the motor protein called the dyneins that are attached along each microtubule doublet. In humans, hereditary defects in ciliary dyneins cause the कार्टेगनर सिंड्रोम. सिलरी डायनीन में अगर कोई डिफेक्ट है तो वो एक हेरिडिटी डिफेक्ट काज करता है दैट इज कॉल्ड द कार्टेगनर syndrome. Men with this disorder are infertile because their sperms are non-motile and they have an increased susceptibility to bronchial infections because the cilia that line their respiratory tract are paralyzed and thus unable to clear bacteria and debris from the lungs. So Cartagner syndrome में स्पर्म नॉन मोटाइल होते हैं, लीड्स टू इनफर्टिलिटी, और इसमें जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि सीलिया नॉन फंक्शनल होते हैं जिसमें बैक्टीरिया ट्रैप नहीं होते और दे विल इन्फेक्ट द लंग्स. Drugs that affect the microtubules, there are different drugs, mainly इसमें Taxol है that binds and stabilizes the microtubules, colchicine, colcimate bind tubulin dimers and prevents their polymerization, and vinblastine and vincristine binds tubulin dimers and prevents their polymerization. Mainly these type of drugs are used in the cancer treatment. That's all about the microtubules. In summary, we can say microtubules are the hollow structures that are made up of tubulin proteins. Alpha और beta tubulin होती हैं, उसमें protofilaments होते हैं. Then they form the plus and minus end structure. Microtubules always originate from the centrosome, और centrosome में कहाँ से होते हैं? Gamma tubulin complex से originate होते हैं. The microtubule perform different function in the cell, and microtubule help in the movement of the cilia and flagella, and microtubule also help in the trafficking of different organelles and different components by using the motor proteins. In next lecture, we will discuss the actin filaments and the intermediate filament.